Hello guys, good morning to all of you. This is Maggi Sir here, and now we are going to get discuss about the graph between binding energy per nucleon and mass number. And after that, we will discuss about the nuclear forces. So here, this is the curve between binding energy per nucleon and mass number. So here, this in x-axis shown the mass number, and this in y-axis binding energy per nucleon in order of MeV. So here, you know that binding energy per nucleon for the atomic mass which lies between 30 to 170. Okay, 30 is less than A is less than 170 means 30 और 170 के बीच में जिनका मास नंबर लाई करता है, ऐसे एटम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट रहती है. देखिए यहाँ से अप्रॉक्स जैसे सल्फर है, आयरन है, मॉलिब्डेनम, आयोडीन, टंगस्टन एंड यूरेनियम, ये लगभग जो है कर्व स्ट्रेट फॉर्म में है, ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं है. देखिए यहाँ पर बताया भी गया है कि बाइंडिंग एनर्जी फॉर आयरन 56 इज इक्वल टू 8.75 MeV. दिस इज द मैक्सिमम value of binding energy per nucleon, and for uranium 235 is 7.6 MeV. means इनके और इस एनर्जी के बीच में ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं है. So due to this reason we can say that binding energy per nucleon of those atoms whose mass number lie between 30 to 170 is approximately constant, and simply we can say that the binding energy per nucleon for an iron atom is this 8.75 MeV, and for the uranium is 7.6 MeV. And you know that for A is less than 30 and A greater than 170 means 30 से कम और 170 से ज़्यादा, क्योंकि इन दोनों के बीच की वैल्यू के लिए तो हमने निकाल लिया है 30 और 170 के बीच का, तो 30 से पीछे का बचा और 170 के आगे का बचा. सो एज लेस देन 30 एंड एज ग्रेटर देन 170 इन बोथ रीजन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेस देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस रीजन. यानी 30 और 170 के बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन वो यहाँ वाली बाइंडिंग एनर्जी से अब ओके इसके पीछे और इसके आगे जो बाइंडिंग एनर्जी है उसके रेस्पेक्ट में देखिएगा लेस रहेगी. ये बताया गया कि यहाँ की जो बाइंडिंग एनर्जी है इसकी कंपैरिजन में कम होगी, और आप इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी अगर इन एटम्स के लिए देखें भी तो क्या है इससे कम, और आगे जाएंगे जब हम तो ये और नीचे आता जाएगा. तो इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी 30 से लेस देन हो एटम ऐसे मास नंबर, और 170 से ग्रेटर हैं ऐसे मास नंबर वाले एटम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लेस देन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन दिस रीजन 30 to 170 मास नंबर. ओके, एंड न्यूक्लियर फोर्सेस आर द शॉर्ट रेंजर फोर्सेस. ओके, सो नाउ लेट मी डिस्कस हियर द न्यूक्लियर फोर्सेस, the forces which works in the nucleus, and the force which bound to the stability very stable or way of the nucleus. That force is the known as nuclear force, and it works between the proton neutron and proton. okay, ये proton के बीच में भी वर्क कर सकता है, न्यूट्रॉन के बीच में वर्क कर सकता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में वर्क कर सकता है. तो ऐसा फोर्स जो न्यूक्लियस को मजबूती से बांधे रखता है, फोर्स which bound the nucleus very strongly, that force is known as nuclear force. okay, and for this nuclear force is greater than the electrical force, and it is greater than the gravitational force. This is the order of nuclear, electrostatic and gravitational force. And second, this is the curve between the potential energy and R range. okay, so whenever this range increases, अगर ये R की वैल्यू इंक्रीज कर दें, then nuclear force decreases slightly and become zero. अगर हम R की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है न्यूक्लियर फोर्स. या सिंपली वी कैन से दैट द न्यूक्लियर फोर्स इनवर्सली रिलेटेड टू द रेंज R which is ordered in the femtometer FM. So here if R is greater than 0.8 FM, अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए 0.8 FM फेम्टोमीटर से,
तो जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो वर्क करेगा एज अट्रैक्टिव फोर्स की तरह, और अगर यही वैल्यू लेस देन अगर इतने से हो जाए 0.8 फेम्टोमीटर, देन दिस न्यूक्लियर फोर्स वर्क्स एज अ repulsive force. Okay, so here this is written as if R greater than 0.8 femtometer, then nuclear force will be works as attractive force, and if R less than 0.8 femtometer, then this nuclear force will behave or works as a repulsive force. So in this way we will draw this graph, and here you know that whenever this R increases slightly, then the nuclear force decreases gradually and it becomes 0. Okay, so this curve between the potential energy and R, which is order in femtometer, and potential energy in order of MeV, this is order between the forces like nuclear, electrostatic and gravitational, and this is the specific condition for the nuclear forces.